टेंशन बताया था मैंने। ये चलिए सामने देखिए, इस तरफ घुमाइए चेहरा। ये बात और तेज स्माइल दीदी। This is Anju. She's 19 years old, and this is the last day of her life as she has known it. और स्माइल होना चाहिए, गुस्से में नहीं। ये She was once a model cadet in the Indian Army. आर्मी में मैं इसलिए ज्वाइन होना चाहती थी क्योंकि मैं देश की सेवा करूं। एक बार और एक्शन। The photos are her last wish, a memento of a life she's leaving behind to follow a different calling. Tomorrow, she will begin her initiation to become a nun. मैं अब विश्व की सेवा करना चाहती हूँ, साध्वी बन के जैनेश्वरी दीक्षा लेके सभी की ओर मतलब धर्म फैलाने की इस पद को अपनाया है मैंने। Anju is a Jain, a member of one of the world's oldest religions, with 6 million followers worldwide. It is a faith dedicated to spiritual liberation through the practice of non-violence. मेरे जीवन में महावीर भगवान कहते हैं, कुछ ना कर पाओ, जीव पर दया करो। Jains believe in reincarnation, that every soul is reborn over and over in an infinite series of lives. One way to break that cycle and free the soul is by becoming a monk or nun. It is the kind of change few have the courage to undertake. Jain monks and nuns follow lives of rigorous self-discipline. They own no possessions. They are celibate. And they cut ties with their families. Many Jain monks even renounce clothing. And so great is their commitment to nonviolence, they travel only by foot, sweeping the ground with a feather brush to prevent insects from being crushed. By focusing on their souls and denying their bodies, Jains believe they will set their spirits free. Anju has spent 2 years preparing to become a nun. But before she can take her vows, she must pass 3 tests to prove she's ready. अब मेरा अंतर हृदय बोलता है कि मेरा मन बोलता है और जिन धर्म की रक्षा के लिए। If she passes the tests, Anju will not only be revered as a nun, Jains everywhere will worship her as a living saint. For the first test, Anju is sent back to the small Jain community where she grew up. She hasn't seen her family for 2 years. The visit is meant to tempt Anju with the comforts of home, to see whether she's willing to cut ties with her loved ones. After her initiation, she might never see them again. पानी नहीं मिल रहा, कहीं सोना नहीं, पैदल चल रहा है, हर चीज तो करना है, बहुत कठिन मार्ग है अंजू। अब तो शरीर को नौकर बनाना चाहिए मम्मी। हाँ अंजू मान जा, थोड़ी अभी थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी सी बड़ी हो जा बस, है अभी बहुत चिंता हो रही सबको, पूरी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी बड़ी हो जा, थोड़ी बड़ी हो जा, मम्मी सुनो तो सही। जैसे कि तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं आरिका बनना चाहती हूँ। धर्म के मार्ग पे तुम जाना चाहती, ठीक है, बढ़िया है। कभी धर्म से डिगना मत,
पापा, मेरे गुरु जो है ना, मुझको इतना वीर बना दिया है उनने कि मैं वीर पुत्री हूँ। बहुत दुख हो रहा है, अभी तो बहुत दुख हो रहा है कि हमसे बिछड़ रही है। अंजू दीदी ने बहुत महान, बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाया है ऊंचा। Anju is unfazed by the first test, and the following morning, she begins the second. दीदी, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। काश में हम लोग भी आप To become a nun, Anju must marry her religion, so her childhood friends dress her as a bride. ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा दीदी आपको? नहीं, बड़े-बड़े शरीर में छोटी-छोटी बीमारियां होती रहती हैं। आप बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रहे हो दीदी, बहुत सुंदर लग रहे हो आज आप। For the Jain community, Anju's wedding day is both a celebration and serious business. She's committing to her faith, and thousands have come to see if she has what it takes to be a faithful bride. Because the next two steps will be brutal, she will say goodbye to her family and endure having every single hair pulled from her head. Anju is completing the second of 3 difficult tests to become a Jain nun, with a celebration meant to try and sway her from the holy life. She's paraded through town, she's celebrated and adored, and tempted with worldly gifts. To pass this test, she must rise above it all. मेरे गुरुदेव ने जो चीज दी है, ना किसी ने दी थी, ना कोई देव साक्षात रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरी मंजिल मुझे मिलने वाली है। The end of the second test is the last moment Anju's family can ever touch her. छू नहीं सकती, ना गले लगा सकती। ऐसा प्यार नहीं है कहलाता। From now on, Anju's family cannot call her by name, and she will treat them as total strangers. Having passed the second test, Anju prepares for the last stage of her initiation. After this, there can be no turning back. इस मार्ग से निकल गई तो फिर समाज से दूर छोड़ दिया जाएगा। It's the most important day of the year for this Jain community. 15,000 people have come to witness Anju's final trial. To become a nun, she must prove she is indifferent to pain and vanity by having every hair pulled from her head.
मैं एक बार सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके लिए दीक्षा दी जाए? दीक्षा? दीक्षा दी जाए? अच्छा, दी जाए। ये सब नियम आपके लिए मान्य है? जी अच्छे भगवान मान। बोलिए, एक बार आप घर छोड़ेंगे, फिर दोबारा उसी तरह घर से नहीं जुड़ेंगे। आगे ध्यान में। जी अच्छे भगवान। गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं अंजू दीदी से ये नहीं कहूँगी इनके मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो समाज के ऊपर चली गई। अब साधु बन गई, सो अब समाज के लिए सौंप दिया। अब मेरा कुछ नहीं है। Anju's transformation is complete. The Indian government will even declare her legally dead. Today, she has been reborn as a living saint, and she will be venerated wherever she goes, walking the roads of India to spread the message of her faith.